मैंने आप लोगों के लिए एक मूर्ति कला का वीडियो बनाया हुआ है जो गणपति की मूर्ति बनाते हुए बनाया हुआ है। और गणपति की मूर्ति इस तरह से बनाया हुआ है कि पर्यावरण पूरक हो, जैसे इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने के लिए मैंने मटेरियल जो यूज़ किया है वो न्यूज़पेपर का मैश जो होता है, कागज़ का जो लगदा जिसको बोलते हैं, वो यूज़ किया हुआ है। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो भी है मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है। आप लोगों को देखने के लिए काफ़ी आसान रहेगा, एकदम सही तरीके से जान सकोगे कि वो कैसे बनाया हुआ है। आशा करता हूँ ये जो मेरा वीडियो है या तो बाकी जितने भी मेरे वीडियो है आप लोगों को पसंद आ जाएंगे। और प्लीज़ इतना मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यार लाइक तो बनता है, और प्लीज़ मेरा फाइन आर्ट्स बाय गोविंद के उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए आइए तो देखते हैं अपना जो वीडियो। दोस्तों इस तरह से न्यूज़पेपर का जो कागज़ है, पेपर है, वो फाड़ के लेना है, उसका टुकड़ा टुकड़ा करना है सब, और फिर उसको पानी के अंदर भिगोना है। कोई ऐसे बाल्टी लेके उसमें पानी लेके उसको भिगाने के लिए रख सकते हैं। कम से कम इसको भिगाने का जो प्रोसेस है 2 से 3 दिन तक उसको भिगाते रखना हुआ है। और फिर वो भिगाने के बाद मिक्सर में उसको ग्राइंड करके लेना है। जब मिक्सर में जितना चाहिए अपने को जो पेपर का मैश, उतना ग्राइंड करके लेने का। और ग्राइंड करने के समय थोड़ा सा अंदर पानी डालना मत भूलना दोस्तों, नहीं तो मिक्सर जाम हो जाता है। इस तरह से ग्राइंड किया हुआ जो पेपर है, पेपर का जो मैश है, वो लेके उसमें थोड़ा सा क्ले अपने को ऐड करना है, क्योंकि क्ले ऐड नहीं करेंगे तो उसको चिकनापन नहीं आएगा। जब क्ले थोड़ा सा ऐड करेंगे तो काफ़ी उसमें चिकनापन रहेगा। अच्छी तरह से हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं, जैसे चाहिए उसको वैसे उसको हम लोग मूर्ति को जो है आकार दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा आगे का वीडियो एंजॉय करो और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।